أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الفاتحة. Thank you, Professor, for the beautiful recitation. Now we begin our program, and I would like to invite our Aligarh Alumni Association New York team to take the stage. To begin with, I invite Bushra Kareem, treasurer, who is the treasurer. Bushra currently works at the Human Resources Department of New York City. She has done her bachelor's in engineering from AMU. She has been in the Tirana team at AMU, and she has sung many times in the Kennedy Hall, and she's a good singer. And we have our beautiful treasurer take the stage. Welcome. Bushra, can you please take the stage? And of course, we have one of the most efficient secretaries that we've had in the recent times. We are proud of Asir Kabir, who has really worked very hard in bringing this event come together. And the magazine that you see before you has been designed and created by Asir. She's a wonderful person, always smiling and standing up to hard times. Thank you, Asir, for everything that you have done. Please take the stage. Dr. Asir Kabir is a child and adult psychiatrist, a proud mom of a beautiful daughter, Maniza, who you'll be seeing quite shortly, and an alumnus of Jawaharlal Nehru Medical College. Thank you.
And of course, we have one of the most handsome men in the crowd, Mr. Shoaib Faizan. He is the Vice President. Can you please come up to the stage? Shoaib, there you go. And I think everybody would agree with me. Shoaib is a technologist with a background in mathematics and computer technology. Currently, he works as a cloud security architect. I don't even know what it means, but anyway, I'm sure it means something really big. At a prominent data analytics firm, he resides in New Jersey City, although he hails from Azamgarh, a historically significant town located on the banks of the Tamsa River. His interests are diverse, and I'm very impressed with his interests, and you will be, I'm sure, because he is interested in swimming and promotes educational activities. He is fond of reading books and exploring the culinary world of food explorer. That's the best thing. I've hardly seen anybody, in their resume they put it up that he's a food explorer. So please meet Faizan. Shoaib Faizan. Okay. Next we have, of course, I'm the first lady. I happen to be the first lady of a very handsome young man. And Mr. Kausar Nasir Usmani, please come and join the stage. So, he's a family man, very proud of him. And we have two beautiful boys, and it's a very close and loving family. Other than, he has also worked very hard. I actually had to take time from him. Kausar, can you please talk to me? He hardly had any time for his family when he was putting up this event. But we are all very proud of him. And Kausar is actually the CEO and President of City Contracting Groups. So, welcome, Kausar. Okay, now I invite one of the, an amazing personality. I would like to invite our guest of honor, Dr. Shameen Dahood, to join the team members on stage, please. Dr. Shameen Dahood, would you please join the stage? And a brief introduction will definitely be given about her integrity. And I thank her for coming and taking her time off and joining us. You will be amazed with her personality when she starts speaking and you get an introduction of her. Now I invite the guest of honor, the chief guest, Mr. Anubhav Sinha, to join this team on stage. And of course, everyone is aware of him. A very fast for him, please. Thank you, everybody. Now it's the time of the President, Mr. Kausar Usmani, to welcome you all. And Kausar, you have 5 minutes. Please stick to that. Thank you. That's too much. अस्सलाम वालेकुम। कुछ लगा है कि अलीगढ़ वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका आने का। Okay, before I start today's event and welcome you all, there's one thing which has been bothering us and some of us, our colleagues. The things we are happening right now in the world, especially the ongoing fight and killing, just like bothering everybody. And we hope and we pray and request all of you to pray that this should stop. Even one person, innocent person is killed, that means you are killing the entire human being. So we should not do that. We should do our best effort to stop this fight. Thank you so much. Now, a greeting from Aligarh Alumni Association, New York. And I am pleased and honored to welcome you all on this 26th Sir Sayyid Day celebration and Mushahara. Today's event has turned even special with the presence of our chief guest,
Mr. Anubhav Sinha, well-known director, producer, and screenwriter of Bollywood cinema. Our guest of honor, Dr. Shameen Dahod, who is an internal medicine specialist with over 35 years of experience. I am thankful to you for gracing this occasion, Mr. Sinha and Dr. Dahod. Thank you. I also welcome Mr. Masood Haider, Mr. Riaz Alvi, Mr. Ahsan Fazli, Dr. Farida Khan, Dr. Aziz Siddiqui, and others, including our past presidents, Mr. Intizam Khan, Mr. Tanveer Ahmed, and Aziz Siddiqui and Moti Siddiqui Sahab also. Thank you. October 17 is globally celebrated in the entire world. There are so many associations across the globe. They all celebrate Sir Sayyid Day this month, mostly in October and November. And this is amazing when how one university has spread just because of one man, Sir Sayyid Ahmad Khan, and we are his legacy. We just carrying his torch, and inshallah we'll be doing that forever in our life. Sir Sayyid Ahmad Khan was not only built one university of high academic caliber, also managed to install a character that holds a passion for the university. And we are always committed to our university's cause, whether we are in America, India, or anywhere in the world. So again, and we have been, our team have been working very hard to make this event a pleasure event for you guys, especially the team which is sitting here behind me, and there are others who are like in the audience, including Tazim Beg, Irfan Beg, and other also there, Nihal Aga. So I welcome all of you, and I hope that you will enjoy this event. Thank you so much. Thank you, Kausar. Much appreciated. You did it in 5 minutes. Good job. Okay, so now we have, after the President inviting and welcoming everybody, I would like to make a special welcome for our guest of honor and the chief guest. So I request Ariba to please come forward and present your bouquet to the guest of honor, Dr. Shameen Dahod. There is another bouquet, of course, for the chief guest, Mr. Anubhav Sinha. I request Munita to please come forward and welcome our chief guest. Thank you, Ariba and Munita. Wonderful girls. Now I invite Asya to present the report and introduce the guest of honor. Thank you very much. And Asya, you can take your time. Assalamu alaikum and a very good evening to all our guests. As the Secretary of ANI, I thank each and everyone in this room. You put in that time to grace this occasion with your presence today, despite the rain and the solar eclipse earlier. You made it. So after the pause due to the pandemic, ANI is hosting the first international Mushaira today, 2023. So big clap to that. In July of this year, ANI hosted the 22nd annual convention of the FAAA, that's the Federation of Aligarh Alumni Associations. It was a productive and nostalgic 3 whole days of events, including inspiring speeches and talks, Numaish-style Shahi Tukre, and a bus tour of Manhattan on a rainy day with non-stop buzzers and much, much more. During the convention, Mr. Kausar Usmani was elected as the president of the federation for this year. I, Asya Kabir, was elected as the secretary of FA.
and Mr. Talib Ahmed was appointed to the Board of Trustees. So this year we had increased representation from New York to the Federation, to FAA. ANI continues to engage in fundraising and various philanthropic pursuits in India, such as Sayyid National Schools and also on the US soil. I was elected as the secretary of ANI in January 2023. A goal very close to my heart is to enhance communication and networking in the elite community of the New York and tri-state areas. So we all know that such a communication already exists, right? No doubt. But we need to just make it easier and more effortless. So we continue to strengthen. In that context, we continue to strengthen our social media platforms. In 2023, we proudly created the ANI YouTube channel, where you can now find videos close to our heart, such as the taranas that we have sung on the FA convention and in previous Sayyid Day occasions. On this YouTube channel, you can find inspiring speeches by our honored chief guests. ANI members are welcome to join the WhatsApp group, and you can follow our website aligny.org, aligny.org for membership information. You can follow our Facebook page with ANI event updates. So we have all gathered here, we are all meeting here today, right, to celebrate the Sir Sayyid Day event, annual event, as well as the Mushaira. But I would also like to say that we plan to host many more in-person events, such as holiday celebrations and outdoor picnics, just again, like to increase our communication and networking. The magazine placed on your tables is our annual magazine, published this year, the New York Elite. This year we have attempted to gather articles from elites spread all over the world, around the globe, and elites from various facets of life and like a multitude of various professions. Digital copy of this magazine will be uploaded on our website. So on that note, please keep smiling and enjoy the rest of the evening. On that note, Dr. Shabim Dahod, it's my great honor and privilege to introduce you today as our guest of honor for this event. And I just said that as I was compiling the magazine today, I read your message that you wrote for us, and I was deeply inspired by your personal, professional, and philanthropic journeys and beliefs. Dr. Shabim Dahod is a physician and philanthropist. She's a member of the Board of Trustees at Boston University and the Dean's Advisory Board at the Medical School. She serves on the Board of Trustees at Tufts Medicine Lowell General Hospital, Mass General Brigham's Cancer Advisory Board, and the Board of Directors of Lowell's Boys and Girls Club. In the past, Dr. Dahod has served on the Board of Dean's Advisors at Harvard Business School, the Board of Trustees at the Pike School, and the Board of Directors of Women Working Wonders. Dr. Dahod, please come and grace us. Thank you. Please give a big round of applause. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. I deeply appreciate and truly grateful for this honor that you have bestowed on me. Thank you, Brother Kausar Usmani, for this recognition. Thank you, Sister Shaheen, for including me as the 100 Muslim women rising above the ceiling. All of the credit for that, what I have little accomplished, goes to my religious leader for spiritual inspiration
leadership, and guidance. His Holiness Dr. Sayyidina Mufaddal Saifuddin and his father, late Dr. Holiness Sayyidina Muhammad Burhanuddin. One is a current Chancellor of Aligarh University. The other is a past Chancellor of this great institution. Their teachings emphasize a balance of both religious and worldly. They encourage us to seek religious and worldly education for both boys and girls, participate in both spheres with same zeal, and give back to society at large, where we live today and the land of our origin. They emphasize the contribution one could make towards the upliftment of society through direct assistance and by helping with education, housing, business. It's so appropriate that these teachings exemplify the ethos of the person whose life we are gathered here to celebrate today, Sir Syed Ahmad Khan. He was a shining light for his time in promoting education and cultivating leaders to uplift the whole society and contribute in nation building. The inspiration could derive from his life is so much needed today. Education has always been very important in our family. My father emphasized that education is more important than wealth. He used to say that wealth is here today and could be gone tomorrow, but education stays with you for all your life. With education, you could always help others in many ways. The verse of Quran inscribed in the emblem of Aligarh University captures the essence of the philosophy. Allah Ta'ala states in Surah 96, verse 5, He taught man what he did not know. Sayyidina Mufaddal Saifuddin said in his poem on the auspicious occasion of his appointment as a Chancellor of Aligarh University in Hijri 1437, Najul Rashad, the right path was given by the Prophet, peace be upon him, for his recitation that the soul and the essence of all knowledge is benefiting the people. As written in the vision and the mission statement of Aligarh University, to contribute meaningfully solving pressing societal problems and well-being of the people. Education and contribution are interlinked for the benefit of society. A highly educated and a successful person who doesn't contribute to upliftment of society is a life wasted. We need more institutions like Aligarh University, and all of you are privileged to be the graduates of such a noble institution. And as I end, I have to say that I have a rock with me. I have a rock with me for the last 50 years, and that is my husband, Ashraf Dabo. Thank you. Thank you very much, Dr. Dabo, for that inspirational speech that she has given. And of course, education is about everything. Educating the girls is very important, and educating the boys as well. Thank you very much for bringing that up. I really appreciate that. Thank you. We definitely need more universities like Aligarh Muslim University. One of the things about Aligarh University is that we are bound together.
no matter who we are and where we are, no matter how much we do not like one another, whatever it is, but we are one. I remember that when my husband was a little sick, and at 11:30 in the night, I called one of the persons who is a doctor, and he actually had doctors calling me. That is what Aligarh is about. You know, like you can call anyone anytime, and then they will be there to help you. So we really appreciate that. Now I invite Kausar Usmani, who is the president of the association, to introduce the chief guest, Mr. Aligarh Sinha. Thank you. Assalamualaikum again. जैसा अभी शाहीन ने कहा, इन्होंने इंग्लिश में कहा, मैं उर्दू में कह देता हूँ कि भाई अलीगढ़ वालों का ये है कि किसी की ज़रूरत पड़े, और इन्होंने जिस डॉक्टर का जिक्र किया वो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर इंतज़ाम खान, जो जब मेरी तबीयत ऐसा लगा कि ख़राब हुई और डॉक्टरों की भी लगा, तो उन्होंने बहुत मदद की और बहुत से ऐसे लोग डॉक्टर्स को कॉल किया कि जो हमसे कॉल कर रहे थे कि हमारे पास आ गए। डॉक्टर इंतज़ाम खान, आपके लिए प्लीज़ कॉल। तो इसी तरह से जो अनुभव सिन्हा के चीफ गेस्ट हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो अलीगढ़ के रिश्ते से हमारे जुड़े हैं। आई होप यू डोंट माइंड मी। काफ़ी लोग तो वो भी जो है वो अलीगढ़ के नाम पे आ गए। उन्होंने कोई भी डिमांड नहीं रखी। नॉर्मली जो ऐसे जिन्होंने कुछ अचीव किया है, ऑलवेज पुट समथिंग कि मैं ये देना चाहिए, he had simply said nothing and he came here and he is very friendly. So as most of you know that he is a renowned Bollywood director, producer and screenwriter. He has made notable movies like Ravan, Das, Tumbin and many more movies. And his movies are not only just entertainment, he has always a message in that, and that's what the specialty he has compared to other Bollywood directors and actors. He is an alumnus of Aligarh Muslim University, where he graduated in mechanical engineering. I don't know what he is doing with the film industry with his degree, but he is definitely a mechanical engineer with the degree. I will just read a quote which Mr. Sinha himself has written. And if I don't go to Aligarh, I would not know much about Hasrat Mohani, Iqbal, Faiz and Majaz. I would be such a poor man without them. Thanks God, I went to Aligarh Muslim University. So this is his character and how he loves university. So please give him a big applause of that. Mr. Aligarh Sinha. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब कैसर भाई ने हिंदुस्तानी में बात की। उर्दू तो मुझे आती नहीं, लेकिन मुझे अलीगढ़ के बारे में, अलीगढ़ वालों से बात कर सकता हूँ। अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं न्यूयॉर्क में बात इसीलिए और ज़रूरी मैं आ जाऊँ। तो सबसे पहले शुक्रिया सर सैयद खान अहमद खान साहब का कि उन्होंने, पता नहीं कब, मुझे साल याद नहीं है, याद था भूलिया, कि ये सोचा कि हर सवाल का जवाब एजुकेशन है। और आज के दौर में जब स्पेशली हिंदुस्तान की सोसाइटी अपनी डाइवर्सिटी से स्ट्रगल कर रही है, उस दौर में भी ये समझ में आता है कि एक्चुअली सारी स्ट्रगल का जवाब कहीं ना कहीं एजुकेशन में रखा है। और ऐसे जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बनेंगे उतना आगे सोसाइटी जाएगी। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी ये शुक्रिया उन तक पहुँचे। जब मुझे कौसर भाई का फ़ोन आया, निहाल का फ़ोन आया कि आओ, तो मैं
आमतौर पे मैं गैदरिंग से बहुत शाय हूँ। जब मुझे कोई भी इनवाइट आता है तो मेरे सबसे पहले दिमाग में ये चलता है कि मुझे यहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए। तो मैं एक बहाना ढूंढना शुरू करता हूँ। मैं पार्टीज वगैरह में जाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, ज़्यादा लोगों से मिलना मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन जब भी मुझे अलीगढ़ के मुताबिक कोई इन्वाइट आता है तो दिमाग पहले ये चलता है कि अच्छा ये है, इस चीज़ को कैसे अवॉइड करके यहाँ चला जाऊँ। और मैं सोच रहा था आज एक्चुअली दिन में मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सा टहलूंगा मैनहट्टन में, वो हुआ नहीं। हाँ, इतनी बारिश हुई, मैंने पीछे भी फोटोग्राफी शुरू की है तो मैं जाके फोटो खींचूंगा कुछ, पर इतनी बारिश थी कि मैं निकल नहीं सका। कल मौसम अच्छा है, कल हाँ, लेकिन कल एक और, हाँ, तो मैं सोच रहा था आज अकेला लेटा हुआ, मैंने कहा यार इतना ऐसा अपने, ठीक है एक वो होता है कि आप यहाँ से पढ़े हैं, वहाँ से आपके कुछ जूनियर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इतनी सारी एसोसिएशंस पूरी दुनिया में हर साल इस दिन को, इस बात को सेलिब्रेट करती है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई और उसको वर्दी ऑफ सेलिब्रेशन मानते हैं। और मैं अभी बात कर रहा था बाहर के, अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाए कि हर साल तुम ये ऑर्गेनाइज करो तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, मतलब मैं पहली बार ही नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोग अपने, और मतलब अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे के बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, हाँ, हम लोग तो उस मामले में प्रिविलेज है कि भाई खाना खा के टेबल उठ गए छोड़ के तो बस वो, लेकिन आप सब जानते हैं। तो उसके बावजूद कपड़े भी धोने हैं, इस्त्री भी करने। आज मैं होटल वाले से इतना नाराज हो गया, उसने मेरा जैकेट मुझे आयरन कराना था, उनके पास कोई था ही नहीं, तो मुझे खुद करना था। तो ये मेरे 70 साल के बाद मेरे ऊपर कुछ कपड़ा इस्त्री किया हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या है, और मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा कि अलीगढ़ जो है ना, AMU खास तौर पे, ये उस गजल की तरह है जो जितनी बार पढ़ो थोड़ी सी और समझ में आती है। और तो हाँ, वो एक एक शेर उसका खुल खुल के आता है और ऐसा लगता है कि ये कहाँ चला गया था। जब मैं गया था तो मेरा जाना अलीगढ़ एक्चुअली एक्सीडेंट था। तो उस ज़माने में जब हम लोग इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया करते थे तो IIT सबसे ऊपर था, फिर रुकी था, फिर और थे, तो मेरा सिलेक्शन सिर्फ अलीगढ़ में हुआ था। तो मैं मजबूरी के तहत गया और वो अब जाके वो ये साबित भी हो गया कि मेरा कहीं सिलेक्शन होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं इंजीनियर बनने के लिए शायद बना ही नहीं था। और वो मुझे एक लम्हा है जो मुझे भूलता नहीं है कि जब वो एडमिशन के लिए मैं गया था तो फादर साथ में गए थे, मैं बनारस का रहने वाला था। तो उस ज़माने में दंगे हुआ करते थे हिंदू मुसलमान के, जैसे सालाना जैसे ईद होती थी, होली होती थी, वैसे दंगे होते थे। अब वो थोड़े कम हो गए, वो दंगे थोड़े ऐसे तवील हो गए, वो अंदर हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन जो एक सेलिब्रेशन होता था हमारी दुश्मनी का, वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो जब पिताजी मुझे छोड़ने गए तो वो बेचारे ऐसे छोड़ के गए थे कि जैसे पाकिस्तान में छोड़ के जा रहे थे। और मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि ऐसे शेरवानी पहनाएंगे। आज मैंने जानबूझ के शेरवानी नहीं पहनी। मैं जब निकला वहाँ से, नॉर्मली अलीगढ़ के किसी भी इवेंट पे जाता हूँ तो शेरवानी पहनता हूँ। तो मेरे डिज़ाइनर दोस्त लोग हैं तो वो कुछ ऐसे टेढ़े बटन वाली शेरवानी बना देते हैं, कभी कुछ उसमें कॉलर लगा देते, कभी कुछ कर देते। तो इस बार मैंने कहा ये वो दौर में एटलीस्ट हिंदुस्तान का समाज है जहाँ पे सिंबलिज्म से बचने की ज़रूरत है। जो आत्मा है, जैसे मैं एक बार यूनियन हॉल में मुझे फेलिसिटेट किया था, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बुलाया था। तो वहाँ जब मैं बोलने के लिए माइक पे खड़ा हुआ तो मैंने टोपी नहीं पहनी हुई थी, तो जाहिर है हूटिंग शुरू हो गई। तो जो यूनियन का जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझे अपनी टोपी दी, मैंने पहनी। फिर मैंने उनसे झगड़ा किया, मैंने कहा भाई ये टोपी और शेरवानी जो है, पहली बात तो ये मुसलमानों की है नहीं, ये हिंदुस्तान की है। दूसरी बात ये कि इससे क्या तय होगा, इससे मेरा प्यार तय होगा क्या अलीगढ़ के लिए? ये टोपी के बिना मैं अलीगढ़ में बोलने का हकदार नहीं। तो उस सिंबलिज्म से बचने के लिए मैंने इस बार तय किया कि लाल रंग की जैकेट पहन के फिल्मी लोगों को सब अलाउड होता है। इतना अच्छा लगता है, जाता हूँ ऐसी जगहों पे, ऐसी इवेंट्स पे, इतने सारे लोग मिलते हैं जो मुझे मालूम है कि इन सब ने किसी न किसी वक्त में शमशाद मार्केट में बैठ के चाय पी है। इन सब ने जाके नुमाइशों में हलवा पराठा खाया है और कभी कभी बिना पैसे दिए भागे।
वो पता नहीं, आप लोग में से कुछ मेरे सीनियर हैं, ज़्यादातर सीनियर लोग दिख रहे हैं मुझे। मैं एक्चुअली मैं मानता हूँ कि मैं अभी 35 का हूँ। मैं बताता हूँ अपने से छोटों को कि हम लोग लड़कियों को सिर्फ देखने जाते थे, उसके ऊपर हमारे दिल में कोई डिज़ायर नहीं थी। तो लोगों को समझ में, मेरे बेटे को बोलता हूँ या और यंगस्टर्स को बोलता हूँ, उनको समझ में नहीं आती बात कि देखने का क्या मतलब है। हमने कहा हमारे यहाँ तो देखना ही इतना मुश्किल था। मतलब मैं एक मेरी सीनियर थी, वो पता नहीं क्यों मेरे साथ चाय पीने चली गई शहर में, रेलवे रोड पे। तो लौट के आ गए, चाय में पी के आए, तो अगले दिन मेरे ऊपर बंदूक लग गई थी। मुझे बुला के धमकाया गया था कि तुम एसएन हॉल की सड़क पे जाओगे नहीं, और मैं 1.5 साल नहीं गया डर के मारे। तो वहां से निकले हुए लोग और हम सब, मुझे इतना अच्छा लगता है कि जाने कहाँ कहाँ पहुंचे। किसी भी मुल्क में जाओ, न्यूयॉर्क में इतने सारे लोग हैं, अलीगढ़ के, ऐसा बाहर से देख के नहीं समझ में आता है। डीसी गया था, अपने साथ के बैचमेट्स हैं, पता है कि वो दुनिया के हर मुल्क में हैं, माशाल्लाह डूइंग वेरी वेल। पर हम सब लोग एक साथ मिलके हमारे इंस्टीट्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं, और आज भी दोस्त हैं। मतलब भले निहाल जैसा दोस्त है लेकिन दोस्त है, भले नजम जैसा दोस्त है, दोस्त है। नजम को आज मैं पता नहीं 30 साल बाद में। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और हम सबको जो कर सके अलीगढ़ के लिए, एमयू के लिए करते रहना चाहिए। कभी आप लोगों को लगे कि मैं किसी काम आ सकता हूँ, अलावा ये ऑर्गेनाइज करने के, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के अलावा, तो मैं उसमें नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा। मतलब मेरा बड़ा मन है, मैं ना मुल्क बनाने के बाद से मैं थोड़ा डर गया हूँ। सर ने कहा अलीगढ़ पे फिल्म बनाने को, कि अब मैं ना इस बात को अब मैं और अंडरलाइन नहीं करना चाहता कि हिंदू मुसलमान एक नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल हमें मोहब्बत पे काम करने की ज़रूरत है, और हम करें मोहब्बत। उसके बारे में बात करके मुझे लगता है हम उन जो भी डिफरेंसेस थोड़े से बढ़ गए आजकल, उसको और बढ़ाएंगे। तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में काम करना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए, एक दूसरे के साथ काम आना चाहिए। और इंशाल्लाह ये लंबा दौर नहीं है, ये दौर भी जाएगा। हम जैसे मैं कल बात हो रही थी, हम लोग खाना खा रहे थे, तो मैं कह रहा था कि हिंदू और मुसलमानों ने बहुत सारे इनकन्वीनियंट कॉन्वर्सेशन किए नहीं आपस में। मतलब जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो जाहिर है हमने एक दूसरे का कत्ल किया, हमने एक दूसरे के घर लूटे, और उसके बाद फिर वो लाइन वाइन खिंच गई, और फिर वो एक अजीब सा हमारा अंडरलाइन टेंशन दोनों कौमों के बीच में रहा है। हिंदू बात करते रहे कि वो मुसलमान क्या खाना मत खाना, क्योंकि वो थूक के देते हैं खाने में। अच्छा, सुन्नी शिया के बारे में ऐसा बोलते थे, और शिया सुन्नी के बारे में ऐसा बोलते थे, पर हमने आपस में कभी हुआ नहीं कि हमने जाके पूछ लिया हो कि भाई आप क्या थूक के खिलाते हैं? तो वो बोल देते कि नहीं भाई, क्यों थूक के खिलाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं बोलता हूँ दोस्तों से बम्बई में, कि अगर अजान की वॉल्यूम से तकलीफ होती है तो किसी ने कोशिश की कि जाके मस्जिद में बात करें कि बॉस थोड़ा सा कम कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस बात पे दंगा हो जाएगा। मुझे लगता है वहाँ जाके आप जो भी ऑर्गेनाइजर होगा, कोई मौलाना साहब नहीं होंगे, लेकिन जो भी होगा उससे अगर बोलेंगे कि थोड़ा सा कम कर दीजिए, फजर वाली थोड़ी कम कर दीजिए ताकि सोने में तकलीफ, तो मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई दंगा हो जाएगा या कोई कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बातचीत होगी, वो कहेंगे नहीं हम नहीं कम करेंगे, जो भी होगा, पर तलवारें नहीं निकलेगी। तलवार को हम दूसरी बातों में वैसे भी निकाल ही लेते हैं माशाल्लाह। तो हमने इनकन्वीनियंट कॉन्वर्सेशंस किए नहीं, वो हमारे अंदर दबी रही बातें, हम एक दूसरे के बारे में अंदर ही अंदर बातें करते रहे, और वो एक दीवार सी थी जो इनविजिबल थी, और अचानक उस दीवार एक्सप्लॉइट हो गई, उस दीवार का इस्तेमाल हो गया। तो अब शायद वो दौर है कि जब हम सबको आपस में बैठ के वो इनकन्वीनियंट बातें कर लेनी चाहिए। मतलब जब मैं अलीगढ़ गया था, मैं एक्चुअली तो नादान था या बहुत सयाना था। मतलब एक दिन वो हमारे मौलाना साहब थे जो तबलीग वगैरह बुलाया करते थे, मुझे ज़्यादातर लोग समझते थे मेरा नाम अनवर है। तो हाँ, जो उधार के रजिस्टर में भी मेरा नाम मुझे पता नहीं था, उर्दू में अनवर लिखा हुआ है, तो मैं कभी भी पैसा बिना दिए भाग सकता था, लेकिन मैं भागा नहीं। तो हमारे बहरहाल मौलाना साहब थे, वो अक्सर तबलीग में आते थे, लेकिन मैंने फिर जोर से बताया कि मेरा नाम अनुभव सिन्हा है।
तो तबलीग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं बरी हूँ। तो उनसे दोस्ती होगी बाद में फिर, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैंने कहा ये अल्लाह मियाँ के आगे ताला क्यों लगा दिया आपने, क्योंकि मुझे वो ताला सुनाई देता था। तो उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने मुझे बताया कि वो लफ्ज़ है क्या। इस किस्म की बातचीत हुई नहीं है, और मेरे को लगता है कि इस दौर के बाद और इस दौर के दरमियान हम लोगों को बातचीत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इतने इख्तलाफ के बावजूद भी अगर इतने प्यार से 70 साल से हम लोग साथ में रहे हैं, तो मेरे घर में मैं खासा नास्तिक हूँ, लेकिन मेरे घर पे गणपति भगवान आते हैं, तो मेरे कुछ मुसलमान दोस्त भी आते हैं। तो एक दिन एक मेरे शायर दोस्त हैं शकील भाई, वो आए हुए थे, तो आरती हो रही थी, तो लाइन लगती है, सब लोग जाके आरती करते हैं, तो उन्होंने भी ली, उन्होंने भी आरती करी। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा यार ये मुसलमान आदमी बुत परस्ती कर रहा है। तो मैंने वो कोने में लेके पूछा, तो बोले नहीं मैं पूजा थोड़ी कर रहा था भाई, मैं तो मुसलमान हूँ, मेरी नियत है, मैंने एक भगवान माना है, ये आपके भगवान है, तो मैं आपकी माँ का आदर करता हूँ ना, तो मैं आपके भगवान का भी आदर करता हूँ। Now these things haven't happened, and I think these are the things that we need to do, and we will have a much happier society. Thanks for inviting me. और मैं ऐसा मेरा शक है कि मुझे बहुत सारा खाना खिलाया है, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अनुपम साहब, वो शायद से भी जूनियर हैं, लेकिन मैंने कहा मैं आपकी शाहीना आपा हूँ, सब मुझे शाहीना आपा कहते हैं। जब मैं पहली बार उनसे मिली, मुझे एक सेकंड भी ये नहीं लगा कि ही सच अ बिग मैन, सच अ फेमस पर्सनालिटी, बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, ही हैज मेड सच ब्रिलियंट फिल्म्स, लाइक आई वुड हाईली एनकरेज यू टू सी वन ऑफ हिज फेवरेट, माय फेवरेट फिल्म दैट ही हैज मेड इज थप्पड़। बहुत खूबसूरत फिल्म है। जैसे कौशल ने कहा कि हर एक फिल्म का एक मैसेज होता है। सो जब मैं इनसे मिली तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा ऐसा, मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे अपने हैं, और इन्होंने भी मुझे इसी तरह से बात की, और इन्होंने भी मुझे शाहीन आपा का मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इंशाल्लाह हमारी जो भी कहिए बहन भाई की दोस्ती कहिए जो भी है इंशाल्लाह कायम रहे। और मैंने अनुभव सिन्हा साहब को पहली बार ANU में कैनेडी हॉल में सुना था, और उस वक्त ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़े थोड़ा सा शुरू हुए थे, और मुझे इनकी बात बहुत पसंद आई। इट वॉज अ ब्रिलियंट स्पीच, इट वॉज सच अ नाइस स्पीच एंड अ ब्रिलियंट स्पीच। और वो बार बार यही स्टूडेंट्स को कहते रहे, आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप कुछ काबिल बनिए, बाकी सब काम मुझ पे छोड़ दीजिए, और हम मीडिया इस चीज़ को टेकअप करें। एंड ही मेड मुल्क, आई वुड एनकरेज यू टू टेक दैट। और ये बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने कैनेडी हॉल में बोली थी, और मैंने फ़ौरन कौसर से आके कहा था कि कौसर इनको ज़रूर बुलाएंगे हम जब भी मौका मिलेगा, और हम ज़रूर इनको बुलाएंगे। हमने कोशिश की एक बार और भी, लेकिन वो मतलब हम कांटेक्ट नहीं हो पाया। इस बार जैसे ही कौसर ने कहा फ़ौरन तैयार हो, एंड एज एन सच अ जनरस हम्बल मैन आई हैव नॉट मेट। बिल्कुल मुझे नहीं लगा कि मैं पहली बार। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। Now it's time for the award ceremony. So I would like to invite Kausar and please come down, and then we begin our award ceremony. I would also invite Ms. Bushra Kareem, who is the treasurer, who will actually take over from here. Thank you, everybody. तो अब जो हमारा प्रोग्राम का जो अगला सेगमेंट है वो है अवार्ड सेरेमनी का। तो इसके लिए सबसे पहले सर सैयद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गोज टू मिस्टर अनुभव सिन्हा फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू कल्चर एंड आर्ट्स। सो प्लीज मिस्टर अनुभव सिन्हा। इसके लिए मैं हमारे प्रेसिडेंट प्रोफेसर उस्मानी साहब को जहमत दूंगी कि वो प्लीज मिस्टर
हमारा दूसरा अवार्ड है वो है सर रॉस मसूद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड and this award goes to Dr. Shamim Dawood for her outstanding contributions to leadership and community development services. So please, Dr. Shamim Dawood, you are requested to come here. और मैं कौसर भाई और मिसेस आसिया को रहमत दूंगी कि प्लीज ये अवार्ड उनको नवाजें. अब जो हमारा तीसरा अवार्ड है वो सर्विस अवार्ड है. वो हम ऐसे मेंबर को देते हैं जो हमारी टीम के एक मेंबर होते हैं. और ये अवार्ड सर्विस अवार्ड गोज टू अफरोज रशीद फॉर हर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी. इन्होंने काफ़ी आनी चीज के लिए मेहनत किया है और ये हम लोगों की बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल और मोटिवेटर रही है. इसके लिए मैं मिस्टर मोती सिद्दीक भाई को इजाज़त दूंगी कि प्लीज़ मोती भाई यहाँ आए और अफरोज रशीद को इस अवार्ड से नवाजें. अब हमारा चौथा अवार्ड वो नूरुर रहमान अवार्ड है जो कि जा रहा है फॉर डिस्टिंग्विश्ड ऑथरशिप टू आफा खानम शेरवानी. वो काफ़ी बिजी रहती हैं, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए मैं उनके बच्चों को मिस्टर अजीज़ और मिस रफ़त को यहाँ पे आने की जहमत दूंगी कि प्लीज़ वो यहाँ आए और उनके बिहाफ में ये अवार्ड कलेक्ट करें. Assalamu alaikum, colleagues, honored guests. It's my honor today to announce the launch of the Noor Rahman Award for Distinguished Authorship. Each year, $1,000 will be awarded to support authors or creators whose work has illuminated topics of interest for the Muslim community in India and or the United States. Its purpose is to encourage authors to tell stories that inspire readers and viewers while advancing understanding and connections among people and across communities. We must tell our own stories. Stories that are authentic, stories that are dynamic, thought-provoking, and ultimately make meaning. The award is inspired by the values and activities of our grandfather, Dada Batuas. He studied history and literature at AMU in the 1920s. Recognized for his strong intellect and moral compass, he was known as a movement leader and a skilled orator. He spoke truth to power
as an AMU student leader. After university, he continued his intellectual pursuits and retained a lifelong commitment to social justice. He was an activist in India's resistance movement against British rule, with his journalist brother, his son Asadur Rahman, and other family members. Their commitment to India's freedom was unwavering. This year, the inaugural $1,000 Nur Rahman Award for Distinguished Authorship is being presented, as mentioned before, to India-based journalist Arfa Khanum Sherwani. This award is for her excellence in pioneering investigative journalism in the service of the public interest. We thank her for her courage and her commitment to telling our stories. And now, ladies and gentlemen, I welcome Usmani Saab to the stage to accept this award on behalf of Ms. Sherwani. Thank you. And now we come to the most beautiful part of the evening, Tarana. So please join us for the Tarana. People are welcome to join. Just one small request before we start the Tarana. I will now request Moti Siddiqui Bhai and Razi Bhai to come over here, and he is releasing his book which he has written, Razi Bhai and Moti Bhai, on Jamil Saab. तो आप प्लीज आए यहाँ पे और अपनी बुक को दिखाएं लोगों को, प्लीज करें. थैंक यू. मेरे बहुत ही अजीज दोस्त अब्दुल जमील खान, आप माइक पे बोलिए. अब्दुल जमील खान साहब, जिनका मेरा साथ रहा है करीब 65 ईयर्स, और याद पड़ता है पिछले साल जब यहाँ फंक्शन हो रहा था, उसके एक हफ्ते के बाद उनका इंतकाल हो गया. किसी तरीके से किसी तरीके की तकलीफ नहीं हुई, हंसते हुए चले गए, हमसे जुदा हो गया. और यही कहना पड़ता है, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त थे, और यही कहना पड़ता है कि ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझ सा कहें जिसे. बहुत ही अजीज, बहुत ही अच्छे थे. मेरा साथ इनका रहा था KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, 1957 से पिछले साल तक. वहाँ लखनऊ में इनके साथ 5 साल रहा. फिर उसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गया, वहाँ पे रजिस्ट्रार में सर्जरी में तो पीडियाट्रिक्स में थे. चंडीगढ़ से हम लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उन्होंने MD किया, मैंने MS किया सर्जरी में. और फिर अलीगढ़ लौट के आया. अलीगढ़ के लोगों को उस वक्त शायद हम लोगों की शक्ल पसंद आई, हम लोग निकाल दिया गया, हम लोग यहाँ आ गए. और यहाँ आके बहुत कुछ स्ट्रगल किया. ख़ासतौर से जमील साहब के लिए यही कहूँगा कि सोशल स्ट्रक्चर में और एकेडमिक्स में और लिटरेचर में और हिस्ट्री में हर स्टेज में वो आला थे. हर तरीके से उन्होंने एक बड़ी अच्छे अंदाज से ज़िंदगी गुजारी, और उसके साथ साथ उन्होंने शेयर किया हम लोगों के साथ. मैं उनका बहुत ही ममनून हूँ कि 65 साल की ज़िंदगी में सिवाय एहसानात के और कुछ नहीं उन्होंने मुझको दिया. और हमेशा उसके साथ साथ मैं उनकी बेगम साहबा फरीदा का बहुत ही मशहूर हूँ कि शादी के बाद उन्होंने हमें, हमारी बीवी को भी अकोमोडेट किया और हर तरीके से हमको और जमील को बर्दाश्त किया. हर तरह का मज़ाक, हर तरह की गुफ्तगू, हर तरह के दोस्त, हर चीज़. जमील का सबसे बड़ा रोल ये है कि इस सोसाइटी के लिए 1970 में सबसे पहले प्रोफेसर असद साहब और शाह साहब का क्या घर में हम लोग 4-5 लोग जमा हुए थे, और वहाँ
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलमनाई का एक तरीके से सोसाइटी बनी थी। फिर उसके बाद देख लीजिए कहाँ से कहाँ माशाल्लाह बहुत ही। कौसर साहब मैं आपको बहुत ही मशकूर हूँ, मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे 2 मिनट दिए जमीन को इंटरव्यू याद करने के लिए। उनके लिए मैंने एक किताब लिखी है, हल्की सी किताब है, छोटा सा, बहुत ही मुख्तसर सा हाल है, लेकिन जो भी पढ़ेगा ज़रूर जमील खान की ज़िंदगी को ज़रूर अप्रिशिएट करेगा। उनकी दुआएं मग़फ़िरत ज़रूर है। रज़ी मियाँ ने इनका फॉरवर्ड किया, मेरे छोटे भाई हैं, रज़ी इंजीनियर हैं, बड़ी अच्छे तरीके से इसको फॉरवर्ड किया है। कुछ आप शुक्रिया मत है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जमील भाई और मोती भाई के साथ मेरा नहीं रहा है जितना जमील भाई का मोती भाई रहा है, ये तकरीबन मैं उनका छोटे भाई कैसे रहा। बस ये बात नहीं बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया मुझे, लेकिन बहरहाल छोटे भाई होने की वजह से जो कुछ करना पड़ा किया मैंने, और बहुत मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया थोड़ा सा उनका शुक्र अदा। जमील भाई हम लोग इस महफिल में हैं और यकीनन जमील भाई बहुत मिस हो रहे हैं। शुक्रिया। एक शेर उनके सिलसिले में कह दूँगा, आप सुनिएगा। मांगे कि अब दुआ किसे भूल जाएं हम, लेकिन जो वक्त दुआ याद आ गया। Thank you. We surely have very good memories of Jalil Bhai, and it's a sad moment, but also it's a moment to celebrate his life. So please join us for Tarana now. अजान अजान वो पीछे जो है ना बंदा उसको निकाल ही दो। अबे तेरी वो ना तस्वीर तो ले ले। अरे ये डायरेक्टर है। हाँ जी हेलो, क्या हम आपकी तस्वीर ले सकते हैं? हाँ जी। अबे हेलो मेरा चमन है मेरा
to come up and